You blind man, which is greater, the gift or the altar that makes the gifts part? Therefore, anyone who swear by the altar, swear by it and by everything on it. And anyone who swear by the temple, swear by it and by the one who dwell in it. And anyone who swear by heaven, swear by God's throne and by the one who sit on it. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Congregation, please rise. करेंगे अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आखिरी हवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदाए काबिल मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मकसदों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। Prepare yourself for the word of God. Let's pray. Oh Lord, we're thanking you that you one more day give us to listen your words, to obey your commandments. Heavenly Father, I pray for myself and the congregation, especially who is watching live. Give your wisdom, blessing, and your special power. Heavenly Father, bless everyone here. Give your wisdom that we can understand especially your biblical words. Give your proper understanding that whatever our Reverend talk to us is come from you, and we listen properly and we meditate your words. Amen. Amen.
Christ in this house. आज जिमर बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारा ख्याल था कि ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। Do I have to interpret this? Yes, yes, of course, if possible. The interpreter wasn't feeling well, so we thought the interpretation wouldn't be done असल today. में इस टाइम हमारा जो प्रोग्राम है, चर्च प्रोग्राम्स जो है, प्रेयर मीटिंग, वो तकरीबन कोई 12 ममालिक में देखी जाती है। Like we said, that our service is live and live by all the different countries, by other social medias. इसमें ज़रूरी नहीं कि हमारे पाकिस्तानी हैं या हिंदी जानने वाले, ये मुख्तलिफ ज़बानों वाले हैं। And it doesn't matter about each origin. It's about all diversity and all the races, and it's not about Christianity, but it's from all above the world. इसलिए भी हमारी 2 लैंग्वेज में हमेशा प्रेयर होती है। And therefore we are having the service with 2 bilingual languages. खुदा उनका शुक्र करते हैं। सबसे पहले बहुत खुशी हुई पास्टर नवीद साहब के लिए कि उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाया, उनके लिए क्लैपिंग की जाए, गाते चले जाएं, हम सुनते चले जाएं। We are very honored and we are very glad by the pastor Naveed, by his worship, as it is really indeed that he was assigned and he is assigned to praise the God. And we were listening the gospel that he presented, and we were desiring to listen more. लेकिन वक्त की पाबंदी है, इसलिए शायद ये हम उनको मौका ना दे पाए, लेकिन हम ख्वाहिश करेंगे कि इस प्रेयर में एक और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे गीत के लिए। But it is all about the limitation of the time. But after the service, we will surely request them to present one more song if he is willing. सबसे पहले वेलकम करते हैं उन तमाम बहन भाइयों का जो इस वक्त खुदा के घर में मौजूद हैं। We give thanks to the Lord for all the people, those who are gathered here in the house of the Lord. खुदा उनका शुक्र करते हैं। मीडिया का जो जेनिफर ऑपरेट कर रही हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। We give thanks to Sister Jennifer, those who are operating the media. और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि जिनके वसीले से आज हम इस जगह पे इकट्ठे हैं, FGCCI इंटरनेशनल चर्च। We give thanks to the FGCCI International Church, which brought us to be together. लास्ट फ्राइडे जब हमारी सारी पास्टर्स की मीटिंग हुई तो उन्होंने नवंबर 1st वीक में जो है वो ओपनिंग की प्रेयर रखी है। हमें बड़ी खुशी हुई कि सब सेटल हो गया है। To be announced that by the last Friday in our pastor meeting, the chairman of the FGCCI has been set the date of opening 1st of November of FGCCI Center. उसमें मेरी ख्वाहिश है आप लोग सब आएं। And we are requesting each of you individually to come along and join with us. आप कुछ ज़रूर ऐलान शादियों के सिलसिले से And the important announcements of marriage. पहली शादी करार पाई है 27 अक्टूबर 2019 12 इतवार सुबह के वक्त। First marriage. Yes. Marriage is held by 27 October, Sunday. Yes. The time. Morning time during prayer. Okay, during the service of Sunday. उनका ऐलान किया जाता हूँ। Let us announce the candidate names. लड़की का नाम The sister's name. रीतू रानी, Ritu Rani. जिनका ताल्लुक पंजाब इंडिया से है। She belongs from Punjab, India.
काफी अरसे से यहाँ रह रही हैं। and living in Malaysia for such a long time. इसी चर्च की मेंबर है काफी अरसे से। And to be informed that she is a church member of FGCCI Sentul. उनके वालिद का नाम अवतार सिंह है। The father name Avtar Singh. लड़के का नाम Brother's name सुखपाल सिंह। Sukhpal Singh. वालिद का नाम रोशन सिंह। Father's name Roshan Singh. ये भी काफी अरसे से यहीं सेटल हैं। And he is living in Malaysia such a long time. इसी चर्च के मेंबर हैं काफी अरसे से। And please be informed that he is a church member of FGCCI. ये पंजाब इंडिया से इनका भी ताल्लुक है। He's belong from the country India, Punjab. इनके लेटर्स हम तक पहुंच चुके हैं। The confirmation from their guardians or the elders, the letters has been sent to the vicar. इनकी ख्वाहिश है कि चर्च मेंबर तमाम इनवाइट हैं। And the bride and the groom is requesting each of the church and ecclesia member to be invited in their marriage. दूसरी शादी करार पाई है। The second announcement of marriage. क्योंकि इनके पास टाइम नहीं, ये इंडिया जा रहे हैं। Please take note that this marriage having the short time because they are soon departing from the Malaysia to their origin country Punjab, India. अगले हफ्ते से इनकी रूटीन से पुकार होगी, लेकिन एक पुकार को दो पुकारें कंसीडर किया जाएगा। So from the next Sunday we will be having the announcement. So please take note that one announcement will be held by 2 times. लड़की का नाम हरप्रीत कौर। Sister's name Harpreet Kaur. लड़के का नाम Brother's name नवीन सुंदर सिंह। Naveen Sundar Singh. इनका भी पंजाब इंडिया से ताल्लुक है। The both brother and sister belong from Punjab, India. और इनका प्लान इंडिया नवंबर में जाने का है। And please take note that their arrival or their departure will be on November. इसलिए मैंने कहा कि इनकी एक पुकार दो के कंसीडर की जाएगी। So their one announcement will be considered by 2. इसलिए अगले इतवार को हम इनके सारे प्रोग्राम अनाउंस कर देंगे। And therefore by the following Sunday we will be announcing more programs. as casual. So खुदा के खादम होने की हैसियत से As a position of servant of God, आप लोगों से तमाम कलीसिया से दरख्वास्त करता हूँ किसी किस्म की कोई कानूनी या शरई वजह हो जिनकी वजह से इनकी शादी ना करार पा सके। as a position of servant of God, I am requesting each of the ecclesia member if any allegation or any court allegation toward these marriages बराए मेहरबानी मेरे पास आ सकते हैं। applied on this. So we are requesting to come in person to vicar. Thank you. इसके साथ ही मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि क्वायर की रिहर्सल शुरू है। Along with this, last Sunday we also announced that the caroling practice has been started very long time. बच्चे और बच्चियां रजिस्टर हो चुके हैं। And the brother and sister has been registered out. और बराए मेहरबानी वो कोई भी इतवार ऐसा ना करें जिसमें वो शामिल ना हो। And to be considered it a serious, so we are requesting each of the brother and sister, those who are registered already, please do not skip or miss any caroling practice. वजह ये है कि हमारे पास सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन पंजाबी घर नहीं है। Because we are not having the Indian or Pakistani houses. हमारे पास मिक्स है जिनको हिंदी और उर्दू नहीं आती। Because we are having the different houses such they don't understand the Hindi or Urdu. इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो हमारे इन बच्चों के साथ इंग्लिश और तमिल सॉन्ग भी सीखें। So it is indeed to practice more with the different songs such as Tamil and English. Thank you. आइए खुदा के कलाम की जानिब चलें। Let us go to the Word of God. खुदा के कलाम जो आज फरमाता है, Today the Word of आज God. की मरकजी आयत
Today the word of God is conveying to us, and today the golden verse is खरूज की किताब उसका चौथा बाब उसकी दूसरी आयत, Exodus chapter 4 verse 2. खरूज की किताब उसका चौथा बाब दूसरी आयत पढ़ने लगा हूँ। और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? Exodus chapter 4 verse 2. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? मूसा उसको जवाब देता है, उसने कहा लाठी। In the reply of the God, Moses said, and he said, a rod. आइए दुआ करें। Let us pray. शुक्र है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। Lord, we give thanks to the Lord. तू जिंदा खुदा है। Lord, you are the living God. एक एक बच्चे को ब्लेस करी। Lord, today we are receiving and we are asking the steadfast blessing तूने upon अपनी बच्ची को everyone. खड़ा किया खुदा Lord, as you raised me, as you collect every power in me, Lord. मैं नहीं, तिमर नहीं, बल्कि हमने होके तू बोल। Lord, we may not speak, Lord, but we speak by your holy wisdom. खुदावंद एक एक बच्चे को ब्लेस करी। Lord, today every child, those who are listening to the word of God, will be blessed by you. जिस जगह Lord. बैठे हुए जो ये सुनते हैं उनको ब्लेस करी। In every places, everyone is residing, Lord, they receive the steadfast blessing. बाप और बेटे और रूह कुदस The के नाम Father में। and the Son and the Holy Spirit. आमीन। Amen. कलाम मुकद्दस की जो आयत पढ़ी गई, Just now we read the golden verse. खुदा ने मूसा से कहा, The God said to Moses, तेरे हाथ में क्या है? What is in thine hand? उसने कहा कि लाठी। A rod. थोड़ा सा वाकया मैं सुनाऊंगा। मैं जानता हूँ कि हर शख्स को नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें इस माहौल को तैयार करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। We are well aware that everyone is not having any requirement to have this incident, but of course to bring everyone along, we have to share this incident. थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। Let us keep it short. मूसा अपनी जगह से भाग के दूसरी जगह जाता है। When Moses escaped from Egypt, गलती से उससे इस्राएली शख्स का कत्ल हो जाता है। and by बड़ा mistake, शॉर्ट बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। Moses killed the Israelites. उसको वो जगह छोड़नी पड़ती, वो सोचता है कि कहीं ये लोग मुझे मार ना दें। And in order to save his life, he had to flee. आगे जाता है, उसको फैमिली मिलती है, उससे शादी होती है, वो बकरियां उसकी जो है वो चारता है। And when he find himself to be somewhere else, he got married, and of course he become the shepherd. आइए हम अपने पॉइंट पे आए। Now let it go to the point. इसी तरह सुबह सुबह एक दिन निकलते हैं अपनी भेड़ बकरियां लेके। Now as a casual time, he is shepherding his his sheep. वो देखता है क्या कि एक झाड़ी है। Now he had a side to the bush. ओ देखता है कि जल रही है, लेकिन झाड़ी नहीं जल रही, आग नजर आ रही है। He had a side that the bush is burning, but the bush is not burning. अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम अपने पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। Now the point is not about the bush, but we are dragging you to our point. इसके दिल में एक चाहत चलती है कि देखूं तो ये आग किस बात की है। Now he had his desire to look into the bush, why the bush is having the fire which is not burning. क्योंकि ये हैरान होता है कि झाड़ी क्यों नहीं जल रही अगर आग लगी है। Because the Moses become astonished why the bush is not burning when there is a fire. जब उस झाड़ी के पास जाता है, And when he reached that bush, उधर से एक आवाज आती है, and the voice came out, परेशान हो जाता है and he becomes shocked. और ये सोचता है कि ये क्या चीज है जो मुझे आवाज दे के पुकार रही है। And he questioned himself, who is it which calling me? गो के ये इस्राएलियों का बेटा था, Indeed, the Moses was a son of Israelites. लेकिन जहाँ इसने परवरिश पाई, But where he grew up,
वहाँ वो इस्राएलियों के हाथ में प्रवेश नहीं पाता, because he didn't agree in the Israelites. लेकिन उसको टेक केयर के लिए उसकी माई आ जाती है। But in the queen area, in the queen of the Egypt, when the queen called for babysits for Moses, the mother came for babysit for Moses. थोड़ा थोड़ा इसको पता है इस्राएलियों के बारे में। Now Moses is minimal aware of the Israelites. क्योंकि माँ कुछ ना कुछ उसके कान में डालती रहती थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। Because while babysitting the Moses, mother feeds about the Israelite and also the culture or also the history. लेकिन उसने उसके जो रवाज ये था कि जो भी बादशाह बनेगा, जो भी शहजादा बनेगा, उसको हर किस्म की ज़बानें, हर किस्म का कल्चर को सीखना है। Now in the Egypt, where the queen was and where the queen adopted the Moses, of course in the regular passage, the Moses becomes a king, and it is required for a king to know every language. इसने इस किस्म के जादू भी सीख लिए, लैंग्वेजेस भी सीख ली, इल्म भी हासिल कर लिया। Now he gained languages, magic, and the knowledge. लेकिन इस्राएल की नॉलेज से वो अभी 2 कदम पीछे है। But for the Israelite knowledge and history, he is a 2 step backward. ये नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं पता, उसको पता है, क्योंकि जो उसकी केयर टेकर बनी हुई है उसको नहीं पता था ये मेरी माँ, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसको सुनाती थी कि यकूब के साथ ऐसा, इब्राहिम के साथ ऐसा हुआ, सबको बताती चली आती थी उसको कुछ ना कुछ। It doesn't mean that he is not well aware of anything about the Israelite, but of course, by the chances of babysitting, her mother was keep feeding Moses about what happened to Abraham, what happened to Jacob and Israelite among all, even though the Moses didn't know that she is my mother. आप लोग सोचते होंगे कि मैं झाड़ी से इधर बैकग्राउंड पे क्यों गया? Now you may wonder why I am talking about this in a way of bush. मैं इसलिए सिर्फ गया कि जब उसको एक अंदर से पुकार आई, आवाज आती है, तो उसका ज़हन ये नहीं समझा कि ये यकूब, इब्राहिम, इसहाक का खुदा है, बल्कि उसके ज़हन में सारे किस्म के बुत और हैवान हैं कि वो जानता है कि कोई ना कोई शैतानी ताकत, यानी कि जिन पे वो यकीन रखते थे उनमें से कोई भी खुदा माबूद हो सकता है। Because when the voice came from the bush, he didn't recognize that he is a God of Jacob, of Abraham, but he assumed that he is any other idol. इसलिए खुदा ने स्पेसिफिक कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक, यकूब का खुदा हूँ, नहीं तो उसको कहने की ये जरूरत ना पड़ती। Therefore the God declared that I am the God of Jacob, I am the God of Abraham, I am the God of Isaiah. Otherwise, the God wouldn't use his significator name. आइए हम अपने मकसद पे चलें। Now let us go to our point. कहता है, खुदा कहता है कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? Now the God said, "What is thine hand?" कहता है कि मेरे हाथ में डंडा है। He said, "A rod." आप गौर से सुनिएगा। Now if you pay attention on the passage, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने, आपसे कभी खुदा ने नहीं कहा कि तेरे पास क्या है। it doesn't could happen that the God never asked you what is in your hand. किसी ना किसी एंगल से खुदा ने कहा कि तेरे पास क्या है। Because the God might talk with you, ask with you in any other angle of your life that what is in your hand. जब हमने सुना, हमने कहा खुदा अगर तू अच्छी बिल्डिंग एक दे दे, But when as soon as we heard this voice, we began to show our desire that what if you gave me a good building? एक अच्छी सी कलीसिया दे दे, Or what if you gave me a good ecclesia? एक अच्छा सा इलाका दे दे, What if you gave me a good area? फिर मैं तेरी खिदमत करूंगा। Then afterward I will show my service. लेकिन मूसा ने क्या कहा उसको? But what the Moses replied? क्योंकि खुदा का प्लान हमेशा हमारे
लिए वंडर प्लान है। Because the God plans for us to show His wonders. ओ एक्सीलेंट प्लान करके वो हमसे बात करता है। Because the God planned and then after He talked. उसने भी प्लान करके मूसा से बात की कि तेरे हाथ में क्या है। And before talking, before asking to the Moses, the God planned and said, "What is in thy hand?" ओ तेरे पास कौन सा स्टफ है, तेरे पास क्या चीज है। What is in thy hand? जीसस भी ऐसा ही था कि जब वो टेंपल में बैठा है। Likewise, the Jesus when He was sitting in the temple. लोग अमीर लोग आके चंदा डालते जा रहे हैं बक्स। And a lot of the people putting the luxurious stuff. गरीब बेवा ने आके उसको एक सिक्का डाल दिया। Let me finish the verse. And a lot of the people are showing their offering, and in a meanwhile, the one old woman came and put her offering. उसने एक सिक्का डाला। जीसस ने कहा सब कुछ इसने डाल दिया क्योंकि इसके हाथ ने वो डाल दिया जो इसके पीछे कुछ नहीं है, ब्लेसिंग वाले हाथों ने डाल दिया। And she offered 1 coin of dinar. Right? One coin of dinar. And he offered, and when the disciple, when everybody began to mock that woman, Jesus said, she is better than you all because whatever she had, she gave to the Lord. इसी तरह एलिया को खुदा ने कहा फलां जा तुझे बुजुर्गा मिलेगी। And likewise, the God said to Elijah that go in that area and you will meet with the Lord. उस बुजुर्गा से एलिया ने कहा कि तेरे पास जो कुछ है मेरे लिए रोटी को ले आ। And you will meet with one old woman, and you will say to that old woman that whatever you have, give me so I eat. उसको फिर ब्लेसिंग मिली। And when the Elijah said that, the woman get the blessing. मोसेस से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? And the God said to Moses, "What is in your hand?" उसने कहा बड़े सिंपल तरीके से मेरे हाथ में डंडा है। And the Moses said, "A rod." इसी से मैं खिदमत कर सकता हूँ, यही मेरे पास है क्योंकि इसी से मैं भेड़ बकरियों की खिदमत कर रहा हूँ। And Moses said that I have a rod where I direct my sheep. जीसस ने भी अपने शिगिर्दों से पूछा। Likewise, the Jesus said to their disciples. और जब नजर मारी तो 5000 से ज्यादा लोग। And when the Jesus had a sight, he figured that more than 5,000 they are. फिलिप्पी से पूछा कि इनको खाना हम दे सकते हैं, इनको खिला सकते हैं। And the Jesus asked to Philippi that can we feed them? उसने कहा 200 दिनार से भी ज्यादा लग जाएंगे, थोड़ी थोड़ी रोटी इनको आ जाए। And the Philippi said that master, we will if we invest 200 dinars. 200 dinars, it more than It is 200 not sufficient dinars, for all. and it will be not enough for them. ये नहीं जानता था फिलिप्पी के उसको बताना है कि मेरे पास क्या स्टफ है, मैं क्या दे सकता हूँ। But the Philippi did not know that he have to say to the Lord that what I have to show my service. क्योंकि जीसस जानता था कि मैं क्या वंडरिंग करने लगा। Because the Jesus knew that I was begun to show the miracles. 2 मच्छियों से 5 रोटियों से उसने सारों को खाना खिलाया। And from the 2 fishes and the 5 breads. Yes. Okay. He fed more than 5,000 people. क्योंकि यही उस छोटे से बच्चे के पास स्टफ था पेश करने। And therefore the small boy had all. हमारे पास क्या स्टफ है उसको पेश करने का? What we have to show our service. हाँ, हम क्यों नहीं ब्लेसिंग पा रहे? Why we are not getting the blessing? क्योंकि हमारे पास जो स्टफ है वो हम नहीं देना चाह रहे, हम उससे मांग रहे, पहले तू ये हमें दे तो हम ये करेंगे। Because we are not giving what we have, but we are desire to ask more. हाँ, मूसा ने कहा मेरे हाथ में डंडा है। The Moses said, I have a rod. उसने कहा जमीन में फेंक दे। And the God said, throw in the इसलिए उसने कहा क्योंकि उसने कहा कि मैं उनके पास जाऊंगा, वो मानेंगे नहीं मेरी बात।
and the Moses said, if I go to the Pharaoh, they will not नो believe. इसराइलियों के पास जाऊंगा वो मेरी बात नहीं मानेंगे। And the Moses said, if I go to the Israelites, they will not believe that I am sent by the God. उसने कहा, खुदा ने कहा ठीक है तेरे हाथ में डंडा है जमीन पे फेंक। And God said, to prove that I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, He said, throw your rod. जैसे in फेंकता है the सांप बन जाता है। As soon he threw, the rod becomes serpent. हैरान परेशान होता है, भागने लगता है। And then Moses becomes shocked and he began to run. और उसको कहता है भाग नहीं, इसको दुम से पकड़ ले। And the God said, "Do not run. You catch from the tail." जैसे दुम से पकड़ता है वो दोबारा डंडा हो जाता है। And as soon he touched the serpent tail, he become the rod. गौर करिएगा, इधर दो चीजों का इस्तेमाल है। Now, if we pay attention to the passage, it use the two objects. बड़े गौर से सुनिएगा, इधर दो चीजों का इस्तेमाल हुआ है। In this main phrase, we are having the two objects. एक हुआ है हाथ का इस्तेमाल कि तेरे हाथ में क्या है, The usage of hand, और एक है कि डंडा स्टफ का जिक्र हुआ है। the usage of rod. हाथ से मुराद है कि आपके जिस्म का हिस्सा है। The hand belongs from your body. हाथ के हिस्से से मुराद ये कि खुदा ने, जीसस ने कहा कि ये जिस्म मेरा घर है। And the Messiah said that this body is is a temple of God. इसमें मैं रहना चाहता हूँ, ये मेरा मुकद्दस है, इसमें मैं रहना चाहता हूँ। And this is where I live, and this is where I want to live. पौलुस ने बड़ा क्लियर बता दिया कि जीसस क्या कहना चाहता है दबे लफ्जों से। And that's why the Paul declare in a palliative manner. कहता है कि ये कलीसिया है, जिस तरह बाजू जिस्म का हिस्सा, बाजू है, पैर है, आंखें हैं, जिस्म के जो हिस्से हैं वो एक कलीसिया है। Like we are having the parts of the body, it resemble the ecclesia. अगर कहता है कि पूरी कलीसिया एक हो, यानी जिस्म एक हो, ऐसा नहीं कि दिल कुछ और कहे, दिमाग कुछ और कहे और स्टफ ला के आप खुदावंद को देते हो, खुदावंद कबूल नहीं करता। And what that mean? If your heart is saying something, if your hand is doing something, if your feet are walking somewhere, that mean you are not a unity. छोटी सी मिसाल देता हूँ क्लियर करने के लिए। If we give example to show a palliative image. संडे के दिन आप चर्च गए हैं। If you walk down to church on the Sunday. आपने देखा चंदे की जो थैली मेरे पास आई है। And you saw that the offering bag is arrived in here. और फौरन दिल ने कहा कि 5 रिंगट डालूं उसके बीच। And immediately the heart said, "Shall I put 5 ringgit?" लेकिन दिमाग ने कहा नहीं, बाहर जाके खाना भी खाना है, 1 रिंगट ही डाल दे। But immediately the mind said, "No, I have to eat my meal, so let us put 1 ringgit." याद रखिए, उसमें 1 डाले, 5 डाले, खुदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुश नहीं होगा। Please take note, even though you put 1 ringgit or 5 ringgit, because of that thing